Rahim. So, welcome to the solid state lecture series. Today we are going to talk about the lattice interplanar spacing or interplanar distance. It's actually the distance between two parallel planes like the one shown here. For example, we have one plane passing through this point O. The second plane is made by the intercepts A1 by H along x-axis, A2 by K along y-axis, and A3 by L along z-axis. So ये intercepts हैं और these intercepts make the one plane as A, B, and C, right? This plane indicated by these dotted lines. अब इन plane के दरम्यान एक plane, let's say it passes through the origin over here. इस plane और इस plane के दरम्यान जो distance है it's given by D. हम measure करना चाहते हैं कि this D in terms of our intercepts, right? ये D distance should be the shortest distance between these two planes, like the one over here. Assume that कि एक plane ये है और दूसरी plane ये है, तो shortest distance इनके दरम्यान वो है जो इन दोनों के ऊपर perpendicular है. ये shortest distance नहीं है. If it's not perpendicular, then it's not a shortest distance. So the interplanar spacing is the one indicated by this black line, right? अब जैसा कि यहाँ पे ये perpendicular है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है और इसी तरह यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है. So इस D को इस प्लेन पे भी इसी तरह से परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि यहाँ इंडिकेट किए गए हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसी तरह एंगल यहाँ भी 90 डिग्री का होगा और एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री का होगा. 3D में है तो ये हर एक्सेस के अलोंग हर एक्सेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस पे एंगल 90 डिग्री होगा. ओके, आई मीन this D is perpendicular to this plane and as well as जो plane यहाँ से गुजर रही होगी उसके भी perpendicular होगा. The parameters over here are from origin to point A, the intercept is A1 by H indicated over here, and similarly for point B, OB, the distance OB is A2 by K, and the last one OC is A3 by L, and OP is the interplanar spacing indicated by distance D. Now if you look at these things, these points, say O, P and A, this makes one triangle which is a right triangle having angle 90 degree at point P, and alpha angle is the angle between this x-axis and our OP line. So OP line के दरम्यान जो एंगल है वो alpha है with respect to x-axis, and with respect to y-axis it's angle beta, and with respect to z-axis it's gamma. तो एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल आपके पास हमारे पास ये बन रही है OPA, and the second one is OPB, and the third one is OP and C. So we have three right triangles whose one angle is 90 degree, of course, because these are the 90 degree is over here. बाकी यहाँ का एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा उन तीनों ट्राइंगल के तीन मुख्तलिफ एंगल्स हैं.
अब इन तीनों जो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम इनको देखें कि ए ओ पी ट्राइंगल, मिसाल के तौर पे ए ओ एंड पी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज A1/H, एंड और थीटा के यानी अल्फ़ा के सामने वाला आपके पास एल्टीट्यूड है। बाकी हमारे पास यहाँ जो इस थीटा के बिल्कुल साथ है या 90 डिग्री के बिल्कुल ये वाला इट्स अ बेस, और हमें रिक्वायर्ड है वही बेस ही तो हमने मेजर करनी है। जो हमें पता है कि ये ओ पी डिस्टेंस इज़ डी और यहाँ से ओ ए डिस्टेंस इज़ A1/H। अगर इस ट्राइंगल में यानी ट्राइंगल ए ओ पी में मैं कोसाइन ऑफ अल्फ़ा लेता हूँ, तो कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस d over A1/H, base over hypotenuse। एंड सिमिलरली अगर दूसरी ट्राइंगल को देखा जाए, द ट्राइंगल BOP, इन BOP एंगल इज बीटा, दिस कोसाइन ऑफ बीटा is equal to OP divided by OB, and this OP is just D, OB is A2/K, so cosine of beta is given by this expression, and cosine of gamma in third right triangle COP have this cosine of gamma D over A3/L, right? If we use the law of cosines directions, then cosine square alpha plus cosine square beta plus cosine square gamma is equal to 1. So take the square over here, take the square of the second term, take the square of the third term, that goes to 1. And if you take d square over here, then we have 1 over this parameter, 1 over this, and 1 over that parameter, the third one. Okay, आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स क्योंकि डी स्केयर है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे ये स्केयर रूट हो जाएगी। फाइनली वी हैव दिस 1 over A1 by this thing, and intercept along y axis square and intercept along z axis square। इसको सिंपली इस तरह से भी लिखा जा सकता है। So D, H, K and L यानी interplanar spacing corresponding to the plane whose Miller indices are H, K and L is finally our H over A1 square plus K by A2 square plus L over A3 square whole inverse square root, right? ये फॉर्मूला हमें किसी भी प्लेन के जो कोई सी भी अगर प्लेन चूज़ करते हैं तो उनका इंटरप्लेनर स्पेसिंग बता सकता है। अब अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें पता है कि A1, A2 एंड A3 ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। सो यहाँ आप प्लग करिए A एंड A, तो A कॉमन आ जाएगा, 1 over स्क्वायर, वो इन्वर्स का है तो जस्ट A बन जाएगी, A into H square plus K square plus L square। I'm sorry, this one is H square plus K square। अब ये फॉर्मूला आप किसी भी सिंपल क्यूबिक के केस में प्लेन का डिस्टेंस, दो इंटरप्लेनर स्पेसिंग मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको मिलर इंडिसेस पता हो। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये कहा जाए कि दो प्लेन्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स जिनके 0 0 0 एक प्लेन है और दूसरी प्लेन हमारे पास 1 1 और 1 की कोई प्लेन है। 1 1 and
वन की दूसरी प्लेन है और हमने मेजर करना है, हमने इनका इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। तो वन इज़ सेलेक्टेड ओवर हियर कि ये ओरिजिन पे है, जो फर्स्ट प्लेन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं। वन की प्लेन जो है वो कहीं यहाँ से पास करती है। तो हम एच के एंड एल को अगर देखते हैं तो ये 1 1 1 एंड 1 है। So plug these things over here, then this will be just as 1 over square root of 3. So a by square root of 3 will be the distance interplanar spacing between these two planes. और अगर टेट्रागोनल सिस्टम है कोई, टेट्रागोनल के केस में a1 a2 दोनों इक्वल होते हैं जबकि a3 मुख्तलिफ होता है। तो इस फॉर्मूला में a1 और a2 को हम सेम कर देते हैं और a3 मुख्तलिफ है। सो दिस विल बी जस्ट h square plus k square by a square plus l square by a3 and this whole inverse square root. Okay, तो इस प्लेन में अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए इंटरप्लेनर स्पेसिंग, देन अल्टीमेटली अगेन वी विल हैव टू लुक फॉर द मिलर इंडिसेस, और मिलर इंडिसेस को यहाँ पे प्लग करते हैं। साथ में हमें इन पैरामीटर्स का भी पता होना चाहिए। देन वी विल हैव how much is the interplanar spacing between these given two planes. That's all about the interplanar spacing. Thank you for your attention.